फ्रूट डेकोरेशन और सैलड डेकोरेशन दोनों करना बहुत ही आसान है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि मैं कैसे डेकोरेट कर रही हूँ ऑरेंज को और यहाँ पे ग्रेप्स को।